traditional healing method. As you all know that today we go to doctor and take so many medicine which are full of chemical. But earlier there used to be no doctor, no medicine. People used to heal themselves by traditional methods. So the first traditional method is Mexican devil, which we also called in Kumaoni region Kaljad. मैक्सियन डेविल, हिंदी भाषा में इसे बासिला कहा जाता है। ये घास हमारे घरेलू उपचार में काम आती है। जब भी किसी को कहीं चोट लग जाती है या कहीं पर कट जाता है तो उसके उपचार के लिए यह घास इस्तेमाल की जाती है। इसको उपचार में लाने के लिए इसकी पत्तियों को निकाला जाता है और उन पत्तियों को सिलबट्टे में महीन पीसकर लेप बनाया जाता है। लेप बनाने के बाद इसको जख्म वाली जगह पर लगाया जाता है। इस घास को लगाने के बाद या इस लेप को लगाने के बाद उस घाव या चोट को भरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और वो जल्दी भर जाती है। Number 4 is aloe vera. We use aloe vera for various purposes, but our main focus is healing. In Kumaoni region, we use aloe vera like someone's hand is burned. We apply aloe vera in it to prevent from the pain. The characteristics that helps the plant to do this are Due to anti-inflammatory, increased immune activity, antibacterial, antiviral effects, and decreased histamine activity properties of aloe vera. It accelerates the healing process of burn wounds. Aloe vera gel can not only increase the amount of collagen in wounds but also change the composition of collagen, increase collagen cross linking, and thereby promote wound healing. Scientific studies have shown that the gel can increase the flexibility and reduce the fragility of skin since 99% of gel is water. Bichugas, also known as prickly chaff flower or aloe vera lenta, is a medical herb that has been used for centuries in traditional medicine. It is a native to the Uttarakhand Kumaon region and is known for its diuretic properties and health benefits. In traditional Ayurvedic medicine, Vichugas is used for its diuretic and anti-inflammatory properties. It is considered effective in treating urinary tract infections, kidney stones, and enhancing kidney function. The herb is believed to promote the removal of toxins from the body through increased urine production. Bichugas is also used to alleviate symptoms of various urinary disorders such as painful urination, urinary frequency, and urinary incontinence. It is believed to help cleanse and strengthen the urinary system, promoting overall urinary health. Furthermore, Bichugas is known for its antimicrobial properties and has been used to treat ailments like dysentery and other gastroessential disorders. It is also employed in traditional medicine to help manage hypertension and reduce excessive bleeding during menstruation. Although Bichugas has a long history of traditional use and is considered safe when used in appropriate doses, it is important to consult with a qualified healthcare professional or Ayurvedic practitioner before using it for medicinal purposes. They can provide guidance and doses, potential interaction, and help ensure safe and effective use. Immune booster. Gudki is renowned for its immunomodulatory properties. It helps strengthen the immune system, improving its ability to fight off infection and disease. It is often used to prevent and manage recurrent respiratory tract infections, fevers, and allergies. Second, anti-inflammatory. Gudki contains compound that possess anti-inflammatory properties. It is used to reduce inflammation in conditions like arthritis, gout, and autoimmune disorders. Number 3, liver health. Gudki is known
as support liver health and protect it from damage caused by toxins. It is used in the treatment of jaundice, hepatitis, and other liver related disorders. Number 4, digestive health. Gutki is traditionally used to improve digestion, treat indigestions, and alleviate symptoms of gastrointestinal disorders such as gastritis and colitis. Number 5, diabetes management. Gutki also found to have anti-diabetic properties, helping regulate blood sugar levels. It also enhances insulin secretion and improve insulin sensitivity. Number 6, stress and anxiety relief. Woodkey is considered as adaptogen and is used for its calming and stress relieving effect. It helps reduce anxiety, promote better sleep, and support mental well-being. It is essential to consult with an Ayurvedic practitioner or healthcare professional before using Woodkey for medicinal purposes. They can guide you on appropriate doses, potential interaction, and provide personalized advice based on your specific health needs. गाय के मूत्र के चिकित्सा उपयोग, हीलिंग मेथड ऑफ काउ यूरिन। नंबर 1, खांसी और सर्दी के लिए गाय के मूत्र में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण के कारण यह खांसी और सर्दी जैसी सांस तंत्रिका संक्रमणों में इलाज में मददगार साबित हो सकता है। पेट रोगों के लिए गाय के मूत्र में पाए जाने वाले विषैले तत्व पेट संबंधी विकारों जैसे कि पाचन संबंधी समस्याओं, एसिडिटी और कब्ज के इलाज में मददगार हो सकते हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य की रक्षा। गाय के मूत्र में पाए जाने वाले प्रदूषकों को नष्ट करने वाले गुण के कारण यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाने और स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। श्वसन की सुविधाएं। गाय के मूत्र में मौजूद बुद्धिमत्तवादी गुणों के कारण यह श्वसन तंत्र को सुधारने और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। नंबर 5, प्रौद्योगिक प्रमुख आविष्कारों में उपयोग। गाय के मूत्र को विशेष तरह के प्रोथोन्स में हाइड्रोजन उत्पन्न करने में, इलेक्ट्रोप्लेसिदियों के बनाने में और बायोकरेसिंथेसियों की संधारणा में उपयोग किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि गाय के मूत्र के चिकित्सा उपयोगों का वैज्ञानिक सिद्धांत पर्याप्त रूप से समर्थन नहीं किया जा रहा है। मेडिकल प्रक्रियाओं में इसका उपयोग करने से पहले एक प्रमाणित आयुर्वेदिक वैद्य चिकित्सक की स्वास्थ्य सलाह लेने अनिवार्य होता है। Nowadays, we have seen that the eye flu is spreading. Gomutra is the best solution of it. We have to just apply a drop of Gomutra in our eyes. After few hours, you will see that your eyes are coming in normal form and you will get relief from eye flu. सेकेंड ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड वाइल्ड फ्लोरा, जो कि नैनीताल में पाया जाता है। इसके जो लीव्स और जो फ्लावर है उन दोनों को मिला के हनी बनाया जाता है, जो कि इस तरह का दिखता है पैकेजिंग के बाद। सो देयर आर सम हेल्थ बेनिफिट ऑफ वाइल्ड फ्लोरा। नंबर 1, रिलीफ फ्रॉम सीजनल एलर्जीज। नंबर 2, strengthen the immune system. Number 3, relief from upper respiratory infection. Number 4, boost healing of wound and reduce infection. Number 5, treat digestive tissues like diarrhea. Number 6, soothes